अगर आपको आना है, if you are in, you be fully in. And if you want to, come and do experiment with this industry, don't. आप ना रहोगे इधर के, ना रहोगे उधर के, मत करो. बॉलीवुड भी ट्रोल्ड होते हैं, करेक्ट, हम भी ट्रोल्ड होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ट्रोल्ड ही होते हैं. टेलीविजन इज वेरी डिफिकल्ट, टेलीविजन इज वेरी चैलेंजिंग, एंड आई हैव a huge immense respect and love for television. And I think for me, if you are an artist, if you are an actor, you should have ideas of everything. घमंडी औरत. घमंड, या बहुत बहुत, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत. हाय स्वास्तिका, हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ. ये काला चश्मा क्यों पहन के क्योंकि रखा मैं हुआ है? सेलिब्रिटी हूँ ना, यूएसपी है. ये मतलब ये ऑटोमेटिक ही जाता है क्या उसके हाँ, ये साथ? सेलिब्रिटी हूँ ना मैं. और क्या क्या जाता है सेलिब्रिटी? और बहुत कुछ जाता है. जैसे आप बात शुरू करो, मैं बोलते रहूंगी. सो आपका सबसे पहले तो ये क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में हम वी आर सिटिंग इन कोलकाता एंड दिस इज अ सिटी व्हिच सेलिब्रेट्स everything, every festival, every occasion. And in Bengali they say 12 मासे 13 पार्बण. Absolutely. आप बंगाली हो? Half. Oh, अच्छा, half. Okay, okay. So ये how are you spending your festive period? What do you like to do? And Christmas में क्या किया? See, I was in Thailand. मैं आई हूँ 2 दिन पहले. तो मेरा ना एक्चुअली वो मूड स्विंग्स के तरह ना चेंज होते रहता है. ऐसा नहीं है कि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, या बर्थडे है, या पूजा है. इफ़ आई हैव वर्क, आई डू वर्क, बिकॉज हम लोग के यहाँ पे शूटिंग के अलावा भी मतलब बहुत पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं. वी कॉल देम माचा, वी कॉल देम शो. हाँ, तो हम लोग जाते हैं, तो हम लोग परफॉर्म करते हैं, गाना वाना गाते हैं, देन वी कम बैक होम. तो मेरा क्या है, मेरा वो जर्नी इज अ काइंड ऑफ लाइक सेलिब्रेशन फॉर मी, कि जाना एंड मीटिंग न्यू पीपल, मीटिंग माय ऑडियंस एंड व्यूअर्स. तो मेरा तो ऐसे मतलब हो जाता है द फेस्टिवल्स. और अगर मैं लाइक आई एम सोशल ओनली ऑन सोशल मीडिया. अच्छा. आप मेरे को ओनली सोशल मीडिया में, मतलब आई एम सोशल ओवर देयर. That's part of your job. That's part of my job, and that's basically me. क्योंकि hardly Calcutta में, it's been like so many years. I am like partially born and brought up in Calcutta. लेकिन I don't know a single pub and मतलब पता मेरे को है, लेकिन I have not went there because because I am not a party animal. Neither कि ये PR कल्चर और ये सब कल्चर मैं ना हूँ नहीं, मतलब जाती नहीं हूँ, एडजस्ट नहीं कर पाती. तो आई स्टे एट होम. मे बी आई ईट अ लॉट एट होम विथ माई पेरेंट्स. मैं मतलब either I watch a movie or a series. तो I celebrate every occasion the way I want to. तो अभी मैं गई थी, लाइक आई केम फ्रॉम थाईलैंड. घूमने गए थे? काम नहीं, काम से गई थी. तो आई वॉज देयर फॉर लाइक 4 days. तो उसके बाद जाते हैं थाईलैंड काम से? हाँ, बहुत जाते हैं. हम लोग के यहाँ पे शूटिंग होता है थाईलैंड में. अच्छा, हाँ, मैक्सिमम थाईलैंड में शूटिंग होता है, क्योंकि क्राबी में बहुत अच्छे सॉन्ग सीक्वेंस शूट होते हैं. एंड आई वेंट देयर फॉर अ वेरी गुड मतलब मैगजीन. इट्स नॉट अ मैगजीन, इट्स अ कैलेंडर कवर शूट. So the pictures have come out really well. Watch out, stay tuned to my Instagram handle. तो yeah, I celebrate it that way only. Right. So जैसे कि आपने माचा का कहा, तो मेरा एक ना बहुत अंदर से क्वेश्चन था बहुत दिनों से. किसी को कोई मिल नहीं रहा था जिससे मैं डायरेक्ट पूछूंगा. तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग सही से गा नहीं सकते, लेकिन फिर भी जाके गाते हैं. तो उसमें आपको एबीसीडी पता नहीं है, लेकिन कैमरा ऑन हो गया, तो आप कैसे एबीसीडी को पोर्ट्रे करोगे, ये आपके ऊपर है. अगर आप गलत भी गा रहे हो, तो आपका वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑडियंस को एंगेज रखना भी. हाँ, मतलब आप कुछ भी करो, आप वो 45 मिनट्स 50 मिनट्स ना आप एंगेज रखो. एंड आई थिंक फॉर मी, इफ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ यू आर एन एक्टर, यू शुड हैव आइडियाज ऑफ एवरीथिंग. आपको थोड़ा गाना भी चाहिए, थोड़ा नाचना भी चाहिए. यू शुड नो द करंट अफेयर्स, व्हाट इज गोइंग एंड व्हाट इज नॉट. तो ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन हो गया और एक्टिंग चालू हो गया आपका. मतलब उसके पहले भी आपको थोड़ा, यू शुड हैव आइडियाज ऑफ एवरी बिट ऑफ इट. ये दिस इज माई थिंकिंग. So I am not a trained singer. Do you call yourself a good singer in your? No. अच्छा. No. But I have this immense love for music because I have a tattoo
which says breathe music. Okay, wow. And I think वो play button है music yeah, का. this is like live play pause Okay. repeat. So I have immense love for music. So yeah, maybe if not an actor, maybe a singer someday. तो कभी ऐसा हुआ है कि suppose you've uploaded something or some like नहीं. there are so many people who have uploaded performance or different artists Yeah. ये माचा में Yeah. तो they get trolled Yeah. कि बहुत कुछ बोलते हैं कि गाना आता नहीं है गाने जा रहे हैं and all of that तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है नहीं, मैं होगी ही नहीं trolled. क्यों आपने अब तक कुछ डाला ही नहीं है क्या नहीं, मैं अगर मैं डालूंगी भी तो नहीं होंगी क्योंकि आई हैव दैट लिमिट ऑफ सुर एंड ताल. सीखा नहीं है मैंने. सीखा नहीं, मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं चिल्लाऊंगी भी नहीं और मैं अंडर द टोन भी नहीं जाऊंगी. आई विल डू सम थिंग्स व्हिच विल मेक द ऑडियंस गेज एंड स्टेयर एंड सिट देयर. So you're born in Mumbai, Yeah. okay, Bombay, and then you moved to Kolkata, Mhm. which you call home now. Mm. And I think you moved out of Bombay when you were pretty young. Yeah, okay? yeah. You're a बहुत child, छोटी थी. right? Yeah. So obviously I don't think you'd have like the core memories of Bombay जो तुम आज आपका शायद एक ही है कि वीकेंड्स में हम लोग गोवा घूमने जाते थे एंड वहाँ पे मथुरन एंड बहुत छोटी थी मैं. एंड देयर वाज दिस मेमोरी कि राज रिलीज हुआ था. हाँ राइट हाँ सो वी यूज्ड टू गो टू दिस प्लेस. अभी मेरे को पता नहीं है वो रेस्टोरेंट है कि नहीं. एम आई सपोज टू टेल द ब्रांडिंग नहीं होगा ना. कुछ नहीं होगा सो देयर वाज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड स्वागत. अच्छा तो वहाँ पे द सेलिब्रिटीज यूज्ड टू कम एट कौन दैट से एरिया में है ये बॉम्बे ये का? You तो don't remember. आपको पूछना पड़ेगा. Because I think है ऐसा कोई रेस्टोरेंट हाँ, सो आई स्टिल रिमेम्बर कि वहाँ पे ना कोई चेयर्स नहीं होते थे. ये लॉन्ग लॉन्ग काउचेस जैसे सोफाज होते थे. एंड तभी राज गॉट रिलीज्ड. आई एम फॉरगेटिंग द ईयर. I think 2001 maybe. 2001 maybe because 2003 में I was in Kolkata. I was back in Kolkata. So I had this छोटो notebook जिसमें मैं I used to take autographs and शानुदा का autograph था and सबका. So I met Dino Moria and Bipasha Basu and I still have that interview. तो ये एक vivid memory is there in my mind. So these are the memories I have, but हाँ उतना ज़्यादा memory तो है नहीं. So suppose if I ask you to like say कि how would you differentiate Mumbai from Kolkata, then I think you wouldn't be able to do it in the current terms. मुंबई में तो मैं मेहमान जैसी थी, यहाँ पे तो मैं लड़की जैसी हूँ. So when did you first realize or decide कि I want to grow up and I want to be an actor? नहीं, ये realization कभी आया ही नहीं. तो ये आने के पहले I was already an artist. How? So I came here. I completed my education, higher studies and all. सब complete करके मतलब वो academical inclination है. मतलब ऐसे ही नहीं कि studies छोड़ के I've just moved in. वो मम्मी ने बोल दिया था कि तुम जो भी करो give me the graduation certificate. मतलब हाँ ठीक है वो मैं दे दूँगी. तो हो गया सब. I wanted to do masters in journalism but हुआ नहीं because already जब I completed my third year उसके बाद 1 year मैंने JU से लिटरेचर का एक कोर्स किया था. तो उसके बाद आई सॉ कि नो JU इज गेटिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल थिंग्स एंड ऑल. तो पापा ने बोला नहीं ठीक है हो गया, अभी जो भी करना है अभी यू हैव गॉट द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अभी और कुछ नहीं करना पड़ेगा. अभी व्हाट यू वांट टू डू यू डू. You want to do a job or do this, that, and that. So I always wanted to be a content writer. Okay. Journalism किया था लेकिन I always wanted to be a content writer. तो 2-3 like stories I still have in my notebook. मैंने लिखा हुआ था अभी. They have not got published anywhere. Something like that. So coming straight to the point कि I met Raj Chakraborty. Okay. उसके पहले I used to do this modeling thing. अच्छा. बहुत फ्रेंड्स मेरे थे जो दे वर कनेक्टेड विथ राज चक्रवर्ती. दोज हु नो राज चक्रवर्ती दे नो. दोज हु आर कनेक्टेड विथ SVF. मतलब वो सब एसोसिएट थे, एडीज थे. तो आई यूज्ड टू हैंग आउट विद देम बिकॉज मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी. तो वो इंटरकनेक्शन एक हो जाता है. तो आई वॉज सिलेक्टेड बाय अ वेरी गुड कैलेंडर नेम्ड फेस. ठीक है, उसका ही हम लोग कैलेंडर कवर शूट के लिए वेंट टू थाईलैंड. सो जो जिस दिन लॉन्च था. दिस इज वे बैक व्हेन दिस इज वे बैक
2012. Okay, अच्छा. 2012. ठीक है, हाँ. So it was a launch day. So I went there. I was a newcomer. I went there with 11 other contestants. I walked the ramp and everything, and I received a call from Rajda कि और मैं राजदा को असिस्ट करती थी. अच्छा, okay. I used to be an assistant Okay. director of Rajda. Hmm. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम राजदा कि ऑफिस से आए, ऑफिस में आओ, आई वांट टू टॉक टू यू. तो मैंने सोचा कि नया कोई प्रोजेक्ट है, पोस्ट प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में बैठना पड़ेगा. सो ही हैंडेड मी ओवर द स्क्रिप्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू मूवी नेम्ड पार्वो नामी छाते तो के. Both of us were launched, Koshani Mukherjee and me, we were launched in the movie. And I was like, हाँ क्या करना पड़ेगा, एक्टिंग करना पड़ेगा राजदा. आई थॉट कि असिस्ट करना पड़ेगा एक्टिंग, बिकॉज आई न्यू नथिंग अबाउट एक्टिंग. वो कैमरा कहाँ प्लेस करते हैं, मतलब आई वॉज अ गर्ल ना कि जो मतलब काजल भी ना अप्लाई करे. अच्छा, ओके. सो आई हैड ऑलवेज बीन लाइक दैट. तो आई वॉज गिवन अ मूवी एज अ लीड under the banner of one of the most prestigious and biggest production houses of Kolkata, Sri Venkatesh Films, directed by Raj Chakraborty. I was like, what is the, क्या हो क्या रहा है, ठीक है. So at that time ना, this did not sink in कि I am working, I will be working under SVF with Raj Chakraborty and with other mainstream actors and all. Right. तो एक मूवी हो गया. I did not take it seriously. मैं घर आ गई. And my parents are, मतलब the most amazing and liberal parents in the world, क्योंकि they just tell me something कि तुम करो, we are there. Whatever you want to do, you get back home safe. That's it. That's how it should be. You get back home safe. You want to. They have never asked me कि तुम मतलब boyfriends मत बनाओ, you don't booze, you don't go here. तुम सब करो लेकिन be back home safe. That's it. That's what I've been told since childhood. तो एक मूवी हो गया मेरा. Then also it did not sink in कि मैं actress हो गई हूँ. नहीं हुआ. Premiere में गई, everything happened. After like 3 months, I received another movie's call. Okay. ठीक है. And in the meantime, I was having my education. मतलब मेरा चल रहा था, college and all चल रहा था. So उसके बाद I got another movie's call. अंकुश के opposite में. अच्छा. हाँ. So मेरे को मजा लगने लगा कि सेट में जाती हूँ तो पैम्पर करते हैं लोग. ये it did not sink in as a profession then कि मेरे को यही करना है. मेरे को मजा आने लगा, like you play a game. I'm sorry I'm saying this, no, but that's okay. yeah. So I received the call and I went there. So we shot for the entire movie. तभी भी it did not sink in कि I'm an actor. Second movie हो गया, मतलब कैलकाटा में होके second movie मेरा हो गया. After that, I received a call from a very known channel in Calcutta, Star Jalsha, for a daily soap, for a mega serial. So I have always, asked Rajda, because he is a godfather, because for him, I came into this profession. He introduced me to a lot of things. Right. So whatever till now, if I'm ever stuck at any point of time in my life, I always call him and ask for suggestions and help. He has always been there. So I called Rajda and I asked him ki Rajda, is this okay if I say yes to this channel and if I do a serial at this point of time? He said, what do you want to do? You want to be an actor or you just want to leave this industry? So I thought ki why not be something which I have never planned and dreamt of? Right. I have always dreamt of ki I'll sit and I'll write. Maybe I'll hold a boom and I'll interview people and go. So my mother told me, whatever you want to do, stick to it. Right. Don't just leave it half-hearted. If you want to be an artist, if you want to be an actor, maybe you have that capability. You do it, but don't just leave it half-heartedly. So from then my career started. Then actually मैं ये क्यों बोल रही हूँ from then my career started, because आप जब कुछ accept करना शुरू करते हो ना, वहीं से आपका career start होना शुरू हो जाता है. ये नहीं है कि आप उसके पहले 10-20 काम और भी कर चुके हो, लेकिन आप अगर accept नहीं करोगे ना, तो आपका career वहाँ से start ही नहीं होगा. So from that part, my career started. And then again I signed a movie and बस कारवा शुरू हो गया. So when you shuffle between TV and the big screen, so
what are the changes or what are the alterations that you have to do, and how similar and how yet different is it from each other? See, TV is very, very difficult. Television is very difficult. Television is very challenging, and I have a huge, immense respect and love for television because my television defines my career. Right. Because I have been face of mega serials, like 5 serial ki face थी मैं. So I recently finished one last July में, मतलब इस July में. So cinema is very good. I mean, 20-21 days of shooting, you go for outdoors, you know, you have song sequences, you have everything. You know, everything, what do I call? वो मतलब प्लेट में सजा के देते हैं आपको. Right. Serials, I'm not demeaning movies because I started my career from movies, but serials engage a lot of patience. 14 hours. अभी तो 14 hours हो And गया. almost every day. It depends. अभी serials have also become very liberal and बहुत छुट्टी अभी मिलता है. तो when I started, like 2015, we shot for like, Ami highest I shot for like 21 hours. Wow. Oh my So God. that was you didn't had this time limit कि 12 घंटा या 14 घंटा. Like मुंबई में they have 10 hours shift for serials. तो यहाँ पे 14 hours है. तो जो ले सकते हैं, for those who actually love working like that, because I love working like that, that's okay with me. But people who can't take it, I think they should give it a thought before getting involved into series. So there's never case of fatigue or like I'm tired and नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं लगता? नहीं, लगता ही आप इंटरव्यू लेने से टायर्ड होते हो. But ये मेरा तो आपका एक काम घंटे में हो है. जाता है. नहीं, but ये आपका काम है ना. Yes, तो yes. 14 hours is also like it's our love. Right. And I think now it's a habit also. Yeah, it's a habit. क्या होता है, मेरा एक like plan है. Like what I do is I work for a serial. It runs for like 1.5 years. Right. अगर बहुत अच्छा होता है तो 2 years में. Right. My like highest serial which ran was 2.5 years. And which one was it? Bhojo Gobindo. Yeah, yes. It was in I Star think that was the Jalsha. most successful. Yeah, that was my second serial, and Bhojo Gobindo, because वो अलग एक story था and all that. So that was my highest serial. It ran for like 2.5 years. अभी मेरा है कि 1.5 years आप एक सीरियल के साथ इन्वॉल्व हो, उसके बाद यू टेक अ गैप. यू लेट योर ऑडियंस डिसाइड कि अब हम स्वास्तिका को किस कैरेक्टर में देखना चाहते हैं. अब सिनेमा में देखना चाहते हैं या ओटीटी में देखना चाहते हैं या सीरियल्स में देखना. बिकॉज आई थिंक अभी ऑडियंस के पास ना बहुत ऑप्शंस हो गए. स्टोरी ऑप्शंस, कैरेक्टर्स ऑप्शंस, एक्टर्स एक्ट्रेसेस ऑप्शंस. So I think they should also take some time to breathe and decide कि हम किस में किसको देखना चाहते हैं. तो कभी सपोज जब भाई आप ये ब्रेक लेते हो तो कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर मैंने ये ब्रेक ले लिया, कितना दिन का ब्रेक लेती है, कितने महीने? It depends. अगर कल काम आएगा तो कल मैं स्टोरी सुन के हाँ कर दूंगी. अच्छा, it depends on the story. हाँ, ऐसा नहीं है कि why am I not getting work, why am I not getting work. वैसे कभी jitters नहीं होता है ना? हर रात होता है. We are from this showbiz business and ये ना डिफरेंट एक चीज होता है. ये होता है कि उसने 4 पिक्चर डाल दिया इंस्टाग्राम में, उसका 54,000 लाइक हो गया और मेरा 15,000 में अटका हुआ है. ये दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. यहाँ होता ही है जो मतलब anyone who will tell कि no I am तो happy in my own life, I am an artist, घंटा आप हैप्पी हो, ऐसा कुछ नहीं होता. वी ऑल गेट फ्रस्ट्रेटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. वी ऑल हैव आवर पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस. बट वो यहाँ रहे तो अच्छा है, यहाँ चले तो खराब है. तो इट्स बेटर यू फील इट, देन यू वॉच समथिंग गुड ऑन नेटफ्लिक्स और प्राइम एंड यू go off to sleep. You don't let that evolve. Once you let that evolve, it will be a problem for you. ये होता है, ये मेरे को भी होता है. अगर one of my contemporaries do something which I did not get or which I was called for, but I was rejected, I will say I was rejected or was not accepted by them,
तो मेरे को तो लगता है आपको भी लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, आपको भी खराब लगेगा, तो मेरे को भी खराब लगता है, लेकिन आप कितने जल्दी उसको टैकल करते हो और एक्सेप्ट करते हो ये आपके ऊपर। So can you sitting here right now at this point of time in 2023, can you say that you've actually learned to handle this with I am maturity learning. and like in spirituality they say that suppose you don't get something or suppose you are upset with somebody, you should do the opposite. You should actually bless that person and like ठीक है जो हुआ उसका अच्छा हुआ and मेरा भी अच्छा होगा. So but ये that सब बोलने requires, की बातें हैं, see that requires a lot of ये सब maturity. I बोलने की understand, बातें हैं, but जो लोग ये कर लेते हैं मतलब see I'm also trying because recently I'm trying to embrace the world of spirituality and मैंने actually realize किया अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि where आपको वो नहीं मिलता and आप वो चाहते हो कि वो मिले and then it kind of slips out of your hand, maybe you've not worked hard enough or somebody else was more deserving. So when I have actually felt that jealousy or that yeah, I'm not worth it or whatever it is, then you tend to feel bad for the longer term and also good opportunities are away from you. But when you actually say like ठीक है यार, maybe that person deserved more. नहीं यही करना पड़ता है ना, Second आप one, हाँ सेकंड वन ही करना पड़ता है, क्योंकि आप कितने दिन बोलोगे कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ. योर पीपल who are staying with you at your home, for example say your parents, ठीक है, or your brother, your sister, or anyone who is majorly connected to you, they get agitated by seeing you exactly. agitated and irritated. तो ये आपने जो सेकंड वाला बोला ना, अल्टीमेटली बोलना यही पड़ता है, करना यही पड़ता है, बोलना भी यही पड़ता है कि 2 रात आप सपोज XYZ someone gets your work which you think you should have got it, आप ना मतलब उसका प्रोफाइल स्टॉक करके उसको मतलब गंदा बुरा सब बोल के यू डायरेक्टली नहीं मतलब आप सो जाते हो, हाँ आप सो जाते हो. फ्रॉम द थर्ड डे यू हैव टू टेल दिस कि ठीक है चलो नहीं हुआ नहीं हुआ, ये होता है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये जनरेशन और एक चीज है ना कि अगर आप उस नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी ही रहने दोगे, then as you said that your entire family will get affected, your work will get affected, you will not get positive vibes. The minute you turn that into something positive ki as you said let go, then you will see achanak there will be positive news coming in, things will be better, but it's easier said than done. I can understand it's not हम बोल तो बहुत इजीली दे देते हैं, it's never easier when it comes to doing it. Exactly, it's never easier because it is never easier. बोलने की बातें हैं, सब बड़े बड़े चीज बोलते हैं, it is never easier. One thing which I because I usually don't share this because I don't want to gain a sympathy or something like that. This generation has a problem ki I have depression, I have anxiety, I have this, I have that, so the world is giving a lot of pressure on me, काम का pressure, इसका pressure, he's not deserving, only he or she goes to parties and talks to producers and directors and काम मिल जाता है, ये मिल जाता है वो. अरे तुम मत ही जाओ ना उस मतलब उस लाइन में ही मत जाओ. You think that it was not meant for you. And there's also something कि अगर आप काम के बारे में कम सोचोगे ना तो काम ज़्यादा आएगा आपके पास. If you constantly keep on thinking why I'm not getting it, going through it, why am I not getting it, नहीं आएगा आपके पास. आप भूल जाओ, आप छोड़ दो, आप ऐसे ही वेले बैठे रहो. You will get calls and you will get work. I am trying to embrace this. I am not कहाँ से सीखा ये जो ज्ञान आप ये मैं सीख रही हूँ. ऐसे कहाँ से सीखा? ये आ रहा है मेरे मतलब कानों में आ रहा है, सब जगह से आ रहा है कि मत सोचो मत सोचो मत सोचो. But we are humans. We are humans. #Swastika says. #Swastika says. Yeah, actually this you should use for your social media. See, I give you a free tip. I am thank you so much, but मेरा ना होता नहीं है. You know the Who 1 month. Manages social media? I'll tell this. 1 month back, you know, I receive a call from my manager and he is telling me जे कल 6 बजे you have to upload this picture. Like so I'm like o'clock. no evening 6 बजे you have to upload this picture and I'm okay fine. तो मैं second day I forgot as usual. I can मतलब मेरा नहीं होता है कि अभी 6 बजे ही मेरे को पिक्चर देना है, 12 बजे ही मेरे को पिक्चर देना है. I cannot मतलब मेरा बस चले तो I won't be
on any of the social media platforms because I don't like it. Right. I don't like it that way. I don't like putting up pictures just to get. Yeah, आपका like will not decide my career, or आपका like will not decide my academical inclination. Or even your happiness. Yeah, it's okay. I mean, अभी तो बहुत जगह से casting is happening through social media. Social media is helping us a lot. I am not even questioning that. But it's just that I don't like scheduling my days and time and posting things on social media. So my manager again calls me at 6:30 and he's like, why have you not, he yells at me, why have you not uploaded the picture? Your insights are going down. You are not uploading any trendy reels. What is wrong with you? I'm like, listen, I forgot. I was watching a documentary. I was writing, scribbling something और मैं सो रही थी. I absolutely forgot to upload it. Schedule your post. Now what? Come again? What is it? Schedule? ये क्या होता है? So there's this option in Instagram and Facebook that you can schedule your. मेरे को पता नहीं है and I'm running social media for the past 12 years. Like हाँ ऐसा होता है. नया फीचर नहीं, बहुत पुराना फीचर है. लाइक ओके ठीक है. सो मेरे को नहीं होता है. बट देन अगर नहीं दूंगी तो रेस से पीछे हो जाओगी. तो ये क्या लगता है ये in the industry that you're in or say we are in, do you think it is very important to stay relevant? Like when you have to, like, is it like a mandatory thing to be super active on social media? It's like a mandatory thing to be super present in all the socializing parties, or like I remember once Adil Hussain said to me ki, like, I mean, he's a fabulous actor. He said, यार see Joy, मैं तो बस बॉम्बे काम करने जाता हूँ, बाकी मेरा घर है दिल्ली में, एक मारुति 800 चलाता हूँ, अब नया खरीद लिया है, 2 BHK में रहता हूँ, और जब काम आता है तब जाता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या काम आना है आ जाएगा. सो which one do you believe in? And so ये भी हो सकता है you believe in something but you're following something maybe to stay in the race as you said. So what is your take on it? See, I'll tell you something. सोशल मीडिया करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ब्रांड कोलैबोरेशंस. Exactly, that's money. That's money. Yes. अभी कोई अगर यहाँ बैठ के बोले नहीं नहीं मेरे को तो मनी दे, क्या नहीं चाहिए आपका, मनी दे दो मेरे को. सब मनी इज नीडेड बाय एवरीवन. मनी इज द अल्टीमेट थिंग भाई. इफ यू हैव मनी यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ. आई बिलीव दैट, बीइंग वेरी ब्लंट एंड अनफिल्टर्ड. I believe in it too. Yeah. So social media आपको करना पड़ेगा for money. Yes. Because brand collaborations आ रहे हैं, be it an influencer or an artist. Correct. Yeah. तो even if you don't like it, now अभी क्या है difference? 3 साल पहले when this real culture was not that much, it did not came in the picture. तो people, ठीक है, हम लोग एक ट्रेंडी गाने में रील करते थे, कहीं जाते थे और डाल देते थे सोशल मीडिया पे. अभी the way I act with the same contentment and conviction I act in front of the camera, I make a reel like that. Because same interest से मेरे को reel भी बनाना पड़ता है, because that is also work for me. Yeah. अब तो वो भी हो गया. अब तो वो reel बनाना भी मेरे लिए एक work ही हो गया. Correct, absolutely. तो मेरे को अगर like आपने बोला, आदिल सर ने like जैसे बोला कि मेरे को सोशल मीडिया में like ऑनलाइन रहना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को रहना पड़ेगा. उनको मुंबई जाके काम करना पड़ेगा, though he doesn't likes the culture and doesn't likes the place. He has to go there and work and then again come back to his comfort zone. मेरे को social media, because that is also my work, because social media is now a part of my acting profession. Absolutely, yeah. Doing photo shoots, putting up pictures is also a way of showing my versatility to the producers and the directors and the casting agencies. Unless you're Ranbir Kapoor. Because he's not on social media. He can afford it. See, he is the Kapoor, he is Ranbir Kapoor. Exactly. Because he is already born with a golden spoon. So, yeah, he has his struggles also, his way. But then we are commoners. Still artists, but commoners in our way. So, when it comes to, say, the audience expectations, now, there's a very thin line. One is your choice, your love. Like, I want to do certain kind of roles, I want to do this kind of projects. And then there are the audience that is expecting something else from you.
For example, like the audience expects, say, Shah Rukh, Salman, Amir to come together. Yeah. But it's unlikely to happen. So I'm sure the audience and your fans and your followers expect you to be seen in a certain role. Whereas you, for your professional commitments or your choices, may or may not be able to fulfill their expectations. See, what happens? Yeah, I'll tell you something. In Mumbai, fans or viewers, they are pretty well connected with the artists. Achha. कि artist को ना, I'm not demeaning the industry I'm working here. I'm just saying the truth, what I feel. वहाँ पे ना ऑडियंस हैव अ से कि एक प्लेटफॉर्म है कि एक मतलब न्यू जनरेशन देयर इज अ पैनल और समथिंग कि आर्टिस्ट गेट टू नो कि व्हाट ऑडियंस वांट्स फ्रॉम देम कि क्या रोल में आप काम करना चाहते हो कि क्या टू वे कम्युनिकेशन देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन ठीक है मे बी टॉलीवुड लैक्स दैट अच्छा बॉलीवुड भी ट्रोल्ड होते हैं करेक्ट हम भी ट्रोल्ड होते हैं लेकिन हम सिर्फ ट्रोल्ड ही होते हैं वी वांट कि I want to go and I want to ask people कि তোমরা আমাকে কি রোলে দেখতে চাইছো how do you want me to portray myself in the screen कि I have been in mega serial playing roles of sweet bahu daughter or a ventriloquist or any one of those लेकिन I want to go and ask people and my audience कि what do you want from me. Right. That communication is not there in Kolkata. So you started off in 2015. It's 2023 now. now. I started off in 2013. Yeah. It's 2023 now, so it's almost a decade. So do you not think that the Bengali कुछ भी नहीं industry किया has अभी evolved? तक कुछ भी नहीं किया है अभी तक So it's the same that is there. It was 10 years back. And no. Social media has taken a नहीं वो तो ठीक है मैं इंडस्ट्री के बारे में बात इंडस्ट्री के बारे में has it evolved in terms of everything? अभी मैं बोल दूंगी तो अभी I think for me पार्टी और पीआर कल्चर अगर थोड़ा कम होता तो अच्छा होता क्योंकि मैं नहीं करती हूँ नो पर्सनल हार्म क्योंकि मैं बहुत मुफट हूँ माई कंफर्ट जोन इज माई वर्क प्लेस एंड माई होम बिकॉज मेरे को कुछ मतलब देयर इज नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री नो नॉट अ सिंगल फ्रेंड्स हाँ लेकिन मैं सबके साथ मिल के बात करती हूँ अच्छा हाई हेलो हग्स एंड दिस एंड दैट बट दैट्स इट आई थिंक पार्टी कल्चर और पीआर कल्चर अगर कम होके अगर ज्यादा वर्कशॉप्स होते ज्यादा ऑडिशंस होते तो अच्छा होता राइट घर पे कौन कौन है मम्मी पापा मैं That's it. Yeah, and I have a small buddy. Okay. So what does an ideal day in your life look like when you're working? And सोना खाना पीना सोना. So like you're like foodie family से आते हो? यार मम्मी पंजाबी है और पापा बंगाली है तो automatically actually I was 65 kgs when I did my first movie. अच्छा हाँ मैं मतलब when I used to stand in front of the camera I used to have double chin. So as days passed by I groomed myself. Because it's needed. Because for me now I'll tell you something. For me I'm an actress, I'm an heroine. People look up to me. So how I should portray myself or present myself in front of the camera is completely my thing. You know, there are women and there are girls who are like, I love the way she dresses up. I love the way she carries herself. So there has to be something. That's why people look up to us. अगर आप सब कुछ खा लो and then अगर आप बोलो कि मैं heroine हूँ तो नहीं चलेगा ना. So what about then? See, there's this racism thing, and also I also believe to a certain extent is very true that about say choices, as you said, there are some people who love to eat. I love to eat. And they are very happy in whatever shape or form they are in, embracing body positivity. So how would you actually separate body positivity from being unhealthy and how, because it's a very thin line. I did a movie on this topic. It was a very renowned production house produced that movie.
Windows Production House from Kolkata. The movie's name is Phata Phati, and I was awarded with 2 awards for the best actress for the movie. So that movie, आपने जो बोला मेरे को क्वेश्चन किया, सेम चीज कि बॉडी शेमिंग, Exactly. बॉडी शेमिंग जो हम लोग बोलते हैं, एंड आई वाज प्लेइंग द रोल, द नेगेटिव रोल. वो हीरोइन में जो कंगना ने प्ले किया था, आई प्लेड दैट रोल ओवर देयर, एंड माय कैरेक्टर्स नेम वाज बिकी सेन. सो मेरे लिए बहुत इजी होगा ये बोलना. आपका क्वेश्चन क्या था कि see, as you said, demands on the industry is to look in a certain way. However, body positivity में वो कहीं ना कहीं fit नहीं करता, because if you are say talented or you're skilled enough, why do you have to again look in a certain way? So this is a very thin line. नहीं, कैलकाटा में उतना है भी नहीं, बट बाकी इंडस्ट्री में तो बाकी इंडस्ट्री में डेफिनेटली है, बिकॉज आई एम हियर इन कैलकाटा. कैलकाटा इज मच मोर, मैंने जैसे बोला कि पार्टी एंड पीआर अगर थोड़ा कम होता तो अच्छा होता. ऑल्सो आई विल ऐड दिस थिंग कि कैलकाटा में ना खाओ पियो मतलब मस्त रहो, एंड कैलकाटा में टैलेंट कम्स फर्स्ट. अच्छा, दिस इज अनदर थिंग विच आई लाइक अबाउट इट, बिकॉज देयर आर वेटरन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, और हमारे जनरेशन में भी, कि ठीक है चलो फिगर फिजिक it comes secondary, but primary is your talent. Right. That is why that is there in this industry. Yeah. That is why the theater culture is much more in this industry. The theater culture. मैं नहीं बोल रही कि सब यहाँ पे मतलब मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही बहुत लीन हूँ, ऐसे नहीं है. मेरे कंटेम्पररी जो एक्ट्रेसेस है, एक्टर्स है, they also maintain themselves a lot, but in Calcutta talent comes first. Right. Followed by a lot of things. Right. And to add to this, my other question is, how do you like separate being healthy from doing what you feel like? Because it's a very thin line with all the dialogue that happens these days, with all the questioning happens these days. The world has become very sensitive, and rightly so. Okay. So if somebody does not look like in a certain way, and there's a lot of body shaming, as you said, so अब कोई अगर खाना चाहता है, अब वो खा के शायद उसका जो अंदर का मेटाबॉलिज्म रेट है शायद उतना फास्ट नहीं है, तो मे बी दे डोंट lose their kgs in the faster way, so they tend to look a little on the healthier side. Yeah. आप क्या ये सिर्फ एक्टर्स के लिए बोल रहे हो? इन जनरल में बोल रहे हो. मेरा एक चीज है कि बिकॉज आई वाज आल्सो अ गर्ल हु हैड डबल चिन, ठीक है, जिसके, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस कि द वेस्ट साइज आई हैड, जीन्स नहीं मिलता था, ट्राउजर्स नहीं मिलता था, ठीक है, ये एकदम मतलब दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स आई हैड टू फेस, माय पेरेंट्स हैड टू फेस. इसमें कोई खराबी नहीं है. अगर आपको खाना पसंद है आप खाओ, लेकिन क्या होता है when obesity hits you ना, the eating becomes an addiction. कि आपको भूख नहीं लग रहा है, आप फिर भी आप खा रहे हो. Sugar and salt craving आ जाता है. वो खा रहे हो, वो मत करो. Because आप अगर मोटे हो ना तो आप सुंदर हो, ठीक है, लेकिन when you eat unnecessary, then the diseases come. Right. कि आपको पता है आपको जुवेनाइल डायबिटीज है, आप फिर भी स्टीविया नहीं खा के आप फिर भी नॉर्मल शुगर खा रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम. आपको पता है कि आपका लिवर में प्रॉब्लम है, फिर भी आप ड्रिंक कर रहे हो, फिर भी आप ऐसी चीजें खा रहे हो जो विच इज नॉट राइट फॉर योर हेल्थ. मैं नहीं बोल रही हूँ कि मोटापा खराब है, मैं यही बोल रही हूँ कि unnecessary eating which will affect your heart, your body parts, that is wrong. Right. And I think doctors call it a disorder. Yeah, disorder, absolutely. It's called the mental and the taste disorder. क्या होता है ना, मैंने एक चीज पढ़ा था कि लोग जब बहुत मोटे होते हैं, and people who are very depressed and people who don't feel okay every day is not the same, तो they have this tendency of eating कि एक टप चॉकलेट लेके के हम लोग बैठ गए, because I'm lonely, chocolate will give me company, because I'm lonely,
maybe alcohol will give me company. ये चीज खराब है. Motapa is not wrong, but ruining your body is wrong. Right. So for all the say the ones who are starting out in the industry, Yeah. and they want to be an actor, or who are just growing up, they're in their teenage years. Yeah. If I have to ask you, like, if you have to give them 3 tips. 3 tips? Yeah. मेरे को दे दो कोई. No, I think you're in the position to give them tips. नहीं, अभी भी tips लगता है, अभी भी. अच्छा, okay, 3 tips I would say. Don't rush and always make your academics strong. अगर आपको आना है, if you are in, you be fully in. And if you want to, come and do experiment with this industry, don't. आप ना रहोगे इधर के, ना रहोगे उधर के, मत करो. Don't expect too much. Acting ना, कोई आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता है. No one can teach you acting. It should be inside. Singing आपको सिखा सकते हैं, dancing सिखा सकते हैं. There are technicalities which you should learn. Right. Where you can better your skill. Cameras right is your left, cameras left is your right. This you can learn. You can learn the light. You can learn the technicalities, but you cannot directly learn acting. So don't run and please have patience. एक साल में नहीं होता है, होता नहीं है. आप एक साल में 1000 पार्टी कर लो, 10,000 PR कर लो, होएगा ही नहीं. आप प्लीज हैव पेशेंस. एंड this industry, especially if you are willing to be a part of our Tollywood industry, you need a lot of patience. Right. And you cannot say, ये मैं आपको बोल रही हूँ और people who are watching me उनको बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी करती हूँ. अगर आप सोचो कि उसने कर लिया, इसने कर लिया, तो उसने कितने दिनों में किया है आपको देखना है. You need to see the journey. Yeah. So don't run and take every day as it comes. Right. Take every day as it comes. ये मैं बोल रही हूँ, घर जाके I'll be also in that complex position. So ये घर का और प्रोफेशनल का बैलेंस how do you do it? How do you manage? मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं घर आ जाती. So you balance a healthy work and yeah, I have that support. I am, touch wood, I am blessed to have a family like that कि मतलब मेरा काम खत्म होता है because they trust me, they know. Because I am that kind of a person. Right. My mother calls me and tells me कि इतने जल्दी तू घर आ जा रही है, थोड़ा बाहर रह क्या, थोड़ा घूम के. नहीं, मेरे को घर आना है, मेरे को बख्श तो, मेरे को घर आना है. तो I find peace. Home is your happy place. Yeah. Home is my happy place. And I have 2-3 people, just 2-3 people in my life with whom I am what I am. And I am an extremely private person. Extremely private. I try to be private, but I am a public figure. So अभी इतने से इतना हो जाता है खबर में. So ये होते रहता है. लेकिन if you ask me, I am a privacy lover. See, there are 2 types of thing. One is being secretive and one is being private. Right. So I am not a secret person. Right. I am a private person. Right. So yeah. So can you recall any fan encounters or even say a colleague encounter which is like really left a mark on you? Like I loved working with Abir Chatterjee because I worked with him in Phata Phati, the movie. I loved working with Rita Bhuri. She was in that movie also. Fan encounter, yeah. Okay. Some instance which is very either funny or very weird. It's a very emotional one. Achha. Because I think the universe has given a lot of emotions and कूट के भरा हुआ emotions मेरे में. So there was this incident. पूजा के पहले I think. This year? Yeah, this year. Achha. So I went for a shopping, like South City में एक friend के साथ. So I was ऐसे ही मैं
एस्केलेटर से नीचे उतर रही थी. सो आई हैव दिस थिंग कि बहुत वियर्ड एक थिंग है व्हेन आई एम विथ माय फैमिली, विथ वन और टू ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स, कि अगर कोई सामने से आके बोलता है एक सेल्फी, तो मैं बहुत आई फील वेरी शाई एंड आई टेल देम कि आई एम सो सॉरी, आई एम विथ माय पर्सनल स्पेस. मेरे को क्यों शाई लगता है? क्योंकि आई ऑलवेज थिंक कि व्हाट दे विल थिंक, the people around your yeah, family. around what they'll think. ठीक. And they're like, are you stupid or what? Go and have pictures. You know, people crave for these situations and memories in life. So मैं हूँ ऐसी. So what happened is that we were just going, ऐसे ही parking lot में हम लोग जा रहे थे. So there's this boy, middle-aged boy. He comes and ऐसे ही जो मेरा friend था, he was walking सामने सामने and I was walking पीछे पीछे. So he comes and he tells me कि ऐसे इशारा करके सेल्फी. तो आई वाज लाइक नो, विथ माय पर्सनल स्पेस. सो मैं जाते जाते ना मैं रुक गई एंड द फ्रेंड टर्न टू मी एंड टोल्ड मी, यू नो, आई हैव दिस फीलिंग यू शुड गो एंड गिव द सेल्फी टू हिम. तो मेरे को ऐसे कुछ लगा कि मैंने ना वापस टर्न किया एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अगेन केम टू मी and both of them, they can't speak, you know, they couldn't speak and they were couple. So उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आती है and she kind of in sign languages. So and I was like, एक होता है ना, you choke like here, and I was like, I'm so sorry, I couldn't understand. So and I gave the picture. I came back to my friend and we were silent throughout the entire journey way back home. I mean, it was मतलब हो जाता है कभी कभी. Understandable. Yeah, so have you ever, you know, come across, say, a career moment where you've received, say, a script or a story which maybe forces you to go against your morals or your principles? Yeah. Like I have a thing. I have a thing like कि I don't feel comfortable lip locking on screen. That's my principle. मैं करूँगी नहीं. मतलब just your choice, yeah. That's fine. That's my choice. That can be anyone. मतलब anyone in the world. मैं करूँगी नहीं. ये ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड नहीं है, पापा मम्मी बोलते हैं कर लो. हाँ ठीक है. मतलब मैं बिकिनी पहन के सोशल मीडिया में पिक्चर दे सकती हूँ, क्लीवेज खोल के पिक्चर दे सकती हूँ, लेकिन आई हैव अ प्रॉब्लम इन लिप लॉकिंग बिकॉज फॉर मी my mind is still like I belong from a very middle class family and lip locking is something very personal and private for me. ठीक है. So few days back I was given a very amazing script by one of the most famous production houses of Kolkata. I won't name that. तो बहुत अच्छा था स्क्रिप्ट, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा था स्क्रिप्ट. and I tried to convince them. They were मतलब कि स्वास्तिका तुमको ही करना है, this is written by you for you, this is written for you, तुमको ही करना है. And मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि the main USP was the lip lock. अभी अगर स्टोरी में यूएसपी लिप लॉक रहेगा तो आप क्या प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को बोलोगे कि वो चेंज करो, बिकॉज वो उनको भी तो बेचना है ना प्रोजेक्ट, उनको भी तो दिखाना है ऑडियंस को प्रोजेक्ट. अगर वो स्टोरी ही चेंज कर दे तो फिर तो कोई मतलब नहीं होता है. एक बार भी अंदर नहीं आया कि shall I bend, shall I change, या आया तो मैं यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम अ टेलीविजन फेस ऑल्सो, I have to put my steps very accordingly. There's a certain section of the audience which looks up to you in a very different way. अगर मेरे contemporary बहुत friends हैं जो एक समय में they used to be part of mega serials. Now they have decided something कि वो OTT ही करेंगे, वो सिनेमा ही करेंगे और उसके लिए they will wait. But I have this thing that I can connect to people through mega serials and televisions a lot. Right. Because that defines my career. Right. मतलब ऐसा भी हुआ था कि मैं बैठी थी, पापा मम्मी दोनों खड़े हुए हैं and I'm like,
বাবা আমি করবো মা আমি করবো বলছে হ্যাঁ কর কাম অন ডু ইট ডু ইট ডু ইট দেন something happened. I discussed a lot with a few of my close people. I spoke to myself, and it was like, no, you are a television face also. People look up to you in a proper bahu and a proper girl character also. Maybe I will do it. मैं 2023 में बैठ के ये नहीं बोल पाऊंगी कि मैं लिप लॉकिंग कभी करूंगी ही नहीं. आई हैव डन इंटीमेट सीन्स, आई हैव डन वेरी नॉर्मल इंटीमेट सीन्स ऑल्सो अर्लियर इन OTT. लेकिन आई डोंट वांट टू डू समथिंग विच विल क्लोज मेगा डोर्स फॉर मी, विच आई डोंट वांट टू डू. सो वो एक होता है ना कि वो what do you call it, your own conscience. Yeah, your own conscience, that's it. So have you ever faced say gender discrimination or say sexism or nepotism? ये सब कभी face किया है? Favoritism. Favoritism तो बहुत है. Yeah, You hero. think this is reality No, in no, no. industry? I would say heroes still get paid a lot more than heroines. That's a complaint throughout. And वो तो I think बहुत सारे sectors में. Yeah, हाँ. And वो I think वो equal pay हो जाना चाहिए. हो जा It's कब time, होगा? it's time. कब Like, this होगा? is the time now. अब इसके बाद Although कब we होगा? spend a lot on kajals and hairspray, हाँ हम लोग बहुत spend करते हैं. तो Despite that मुझे लगता है equal pay तो होना ही चाहिए. Yeah, equal pay होना चाहिए. और I think nepotism कलकत्ता में उतना यही सीन है यहाँ पे. नहीं है. और फेवरेटिज्म डेफिनेटली है. दैट्स व्हाई आई कॉल कभी डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है फेवरेटिज्म. डायरेक्टली इम्पैक्ट मतलब शायद आपसे बात हो गया हो लेकिन हाँ हाँ एकदम मिल गया. कम ऑन बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है. आई वोंट नेम बट ठीक है. आई मीन मे बी फॉर दोज इंसिडेंट्स आई एम अ स्ट्रॉन्गर आर्टिस्ट राइट नाउ. I am a strong and right now nothing bothers me, but then everything bothers. Yeah, I understand what Yeah, nothing bothers me, but then everything is bothering me. So ठीक है जो होना है हो जाएगा. I think in this industry I would also add कि every artist and every actor or actresses should have another means of interest also. Maybe someone wants to open a coffee shop or a restaurant right. or a boutique or something, so that they don't get too much affected by the favoritisms or by Also the issues, lack of work. So yeah, unless they are coming from a very rich family तब तो क्या ही फर्क पड़ता है. कलकत्ता में है रिच फैमिली. I think so है. But I think rich family में this interview is gonna kill me. अच्छा. अब इंडस्ट्री में कितने वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो नहीं पता, बट ऐसे तो बहुत है ना. अच्छा. So ये जो ऑनलाइन जब क्रिटिसिज्म होता है या ट्रोल्स होते हैं, so how do you मेरे को मजा आता है. Do you ever get affected? You don't seem like a person who will get affected. नहीं मेरे को what is trolling? See, I'll tell you. Suppose I have worn a blue dress with a red chappal. अच्छा. And someone clicks and give that picture on Facebook and Instagram. ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कहेंगे लोग. 4 गलत बातें कहेंगे, 3-4 अब्यूजिव कमेंट्स कहेंगे. वो तो वेरीफाइड अकाउंट है, फिल्टर में पड़ जाता है, कमेंट फिल्टर हो जाता है. तो व्हाट ये क्या इशू है कि ट्रोलिंग. इफ यू वांट टू एक्चुअली get trolled like what Alia Bhatt got in AIB troll. अच्छा हाँ. इसको बोलते हैं ट्रोलिंग. ये फेसबुक कमेंट्स में कोई ट्रोलिंग नहीं होता है. Do you ever go through the comments? नहीं, फिल्टर पड़ जाता है. वेरीफाइड अकाउंट का पर्क्स ऑफ हैविंग अ वेरीफाइड अकाउंट. कभी इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड्स फेस किया है? Double standards as in people having two-faced people who are two-faced. Everyone. कभी ऐसा पर्सनल कुछ एग्जांपल के साथ विदाउट नेमिंग एनीबॉडी? हाँ, everyone. Starting from big to. So have you ever thought with कि अब कुछ और करती हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा? हाँ करूँगी. क्या करने का प्लान? I think maybe a food truck. Oh, अच्छा. अभी writer नहीं होगा. अभी if I go to pitch my story somewhere,
अभी क्या है ना, अभी लोग बोलेंगे बाबा এতদিন অভিনেত্রী ছিলি এখন রাইটার হয়ে গেলি, सो वहां पे नहीं पॉलिटिक्स काम करेगा. आई कैन ट्राई ये लाइक. हम लोग स्क्रिप्ट्स ले रहे हैं भाई, तो अगर कुछ अच्छा है तो हिंदी में तो बताइएगा, हम लोग लेने के लिए रेडी है. सो आई हैव दिस थिंग फॉर एड फिल्म्स. अच्छा हाँ. मेरे को एड कंटेंट लिखना बहुत अच्छा लगता है. और मे बी सम ईयर डाउन द लेन मे बी अ फूड ट्रक और अ फूड जॉइंट, जिसमें ऐसा नहीं है कि मैं वो 5 स्टार खोलने वाली हूँ. Right, नहीं right, हाँ, नहीं, हाँ. एकदम नहीं, क्योंकि यू नो बिजनेस कम्स फ्रॉम कॉमनर्स. तो ऐसी कोई चीज खोलो जहां से आप बिजनेस कर सकोगे. नॉर्मल, इट कैन बी अ रोड साइड स्टॉल और समथिंग लाइक दैट. डेफिनेटली आई विल नॉट गो एंड सिट देयर, बट जहां से But you can also. प्रॉफिट, हाँ, जहां से पैसा आएगा जहाँ से पैसा आएगा वहाँ वहाँ. पे. हाँ. Right. So our team, you know, they found out some random comments from your Instagram. Shit. So 5 comments they have given to me. Okay. And ये पांचों मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ. And आपको मतलब you have to give me a reaction to this. And मुझे जो लगता है कि आपका हर एक रिएक्शन सेम ही होगा, because as you said you're not bothered. ये मेरे को देखना ही नहीं है मेरे को. First one is कोई अच्छा काम करे ये सब ना करके. इस पे क्या बोलोगे? मतलब पिक्चर ना डाल के कोई अच्छा काम करे, मतलब सोशल मीडिया में दिया है तो पिक्चर के नीचे ही कमेंट किया होगा. तो मतलब पिक्चर क्लिक ना करके कोई इसी के बेस पे. हाँ ये. तो मेरे लिए पिक्चर डालना उस टाइम में अच्छा काम नहीं है, आपके लिए नहीं हो सकता. अच्छा, आप सुंदर हो फिर भी ऐसे पोस्ट क्यों करते हो? ऐसे पोस्ट में मेरे को और भी ज्यादा सुंदर लगता है, इसलिए. कैसे कैसे कपड़े पहनते हो तुम? कैसे कैसे कपड़े, मे बी देयर वाज मे बी अ बहुत मतलब खुला खुला कपड़ा था या समथिंग लाइक दैट. आई थिंक यू शुड चेक योर ऑर्थोडॉक्स लेवल. घमंडी औरत. घमंड, या बहुत बहुत, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत. एंड द लास्ट वन, नौटंकी ज्यादा एक्टिंग कम. नौटंकी इज ऑल अबाउट एक्टिंग, and acting is all about naughty. Right. So, thank you, Swastika. Thank you so much for coming to Twisted Truths. Before you go, we'd ask you to sign this for us. Just read out a message, maybe write a small message for the team with your signature. Why don't you read it out to them? Okay. Loved every bit of our conversations. Because ये फिर से पूछ ले क्या ये सच है या सिर्फ ये सच है. ये सच है क्योंकि I have given a lot of interviews and all. So people don't give you your space to talk, which you did and Thank your you so team much. did. And may you all and your channel flourish a lot. Thank you so much. Lots of love, Twisted Tales with love. Twisted Truths. Twisted Truths, okay. हो सकता है, ये अक्सर होता है. नहीं, एक्चुअली मेरे को ट्विस्टेड टेल्स भी अच्छा लगा नाम, सो ट्विस्टेड टेल्स एंड अगर कभी चेंज हुआ तो ट्विस्टेड टेल्स. I यस gave you one idea, you gave me one idea. यस यस यस, एंड आई थिंक वील बी फ्रेंड्स with this channel. और wish you all the luck. Thank you so much. And this is a small token of appreciation. मेरे को कुछ नहीं पता इसमें क्या है. टीम लेके आया तो अभी भूल चुके थे वो लोग लास्ट मिनट पे. So अगर अच्छा नहीं होगा बताना, better गिफ्ट देंगे. This is love, and thank you for giving me a lovely evening. Thank you so much. Thank you. Bye bye.